let's take this topic today. Route determination. Okay. One minute. Route determination basically uh, part of two module, sales and distribution and logistic execution. Right. After the order process, next process is in sales, shipping, transportation, and delivery process. Right. So in the shipping and transportation process system, how find the which route we're going to deliver these goods to the customer, to the customer shipping condition you want, what kind of shipping, and what are the transportation we use for shipment process, and what are the total distance covered, who the customer placed the order, and who the customer receiving the good like ship to party. These all are determined by system through the route determination, right? So this concept actually part of sales and distribution, and logistic execution is the one of the module where we have all kind of shipment process. Okay. So route determination is basically done based on the target country and transportation zone along with shipping point. In which country, which zone product going to delivered, and from which shipping point product will be dispatched and moved to the customer. Right. So route determination basically it's maybe inside the country or maybe from one country to another country. Right. Like for example, India to US. Hello. Yes, sir. हाँ, अभी तो याद आया यूएस से याद आया कि H1B HB1 ना वीजा Yes, correct, correct. कितना Hmm. महंगा हो गया Yes. क्या हो रहा है पता नहीं Hmm. हाँ, हाँ। तो यहाँ पे रूट इज डिटरमाइन ऑटोमेटिकली इन द सेल्स ऑर्डर बेस्ड देखो यहाँ पे चार फैक्ट है इसी के बेसिस पे रूट डिटरमाइन करता है पहला तो डिपार्चर जोन ऑन कंट्री ऑफ द डिलीवरिंग प्लांट यानी कि एक जहां से प्रोडक्ट डिस्पैच हो रहा है and which is the plant in that. Okay, just like for example, Bangalore. Product is dispatched from the Bangalore delivering plant, है ना? The plant from where the product will be dispatched, that is called Bangalore plant. Okay? And destination zone means where the product is going to deliver. Like a customer who receiving the good, that is called ship to party. This is too important. The place from where the product will be dispatched and what is the plant of that place. And where the product is going to deliver, who the customer, like ship to party. What is the shipping condition of the customer? You want what kind of shipping? Immediate, standard, something. And what is the mode of transport? Your transportation group, which is maintained in the material masters. These four factors, okay, to determination of routes. So in the route, we have mode of transport. We have basically typical mode of transport is four: rail, road, air, and sea. These are four mode of transport, right? So we have to know define mode of transport like road, rail, sea, air, and shipping types like what is the shipment process by truck, by train, by aeroplane, by ship. And for example, road to truck, rail, train, sea, ship, air to airplane. Okay, so we have to know what the mode of transport and shipping type, and then transportation connection point. Transportation connection point basically the point from where the transport get connected. यानी कि this is near to the shipping point. Okay, right. Transportation connection point is basically near to the shipping point. It represents the connection point from where product will be dispatched and move to the customer place, right? So that is called transportation connection point. So transportation connection point also important, and then we have to go with the routes and distances. Here, Yes, the sir. mode of transport means this represents the medium through which the product going to delivered, yeah, transferred from one location to another. And shipping time, actually, the vehicle, like which vehicle we use, truck, train, rail, sorry, airplane and ship.
And transportation connection point, these are the points where the transports are connected. Yeah, transport point are connected. Typically, it is very near to the shipping point also, just like a railway station, airport. That is the place where the transport gets moved. So these three important things we have to know. Then we'll go to the route and stages. So let's see. We follow the step. Is PRO, then SAP reference IMG, sales and distribution, basic functions, and rigid routes. The routes we have defined routes, and there is a defined mode of transport. You know, see here, mode of transport we have road, rail, sea, air. This is standard. We don't need to define new because this is all of the standard we use. Okay, and there is a defined shipping type. Truck, train, ship, rail, something. It's too important. And transportation connection point. If we define the transportation connection point based on zone, like for example, from Bangalore to Mumbai, it's going to deliver. So one transportation connection point in Bangalore, another transportation connection point in Mumbai. So basically, transportation connection point is a transport points where the transport get connected. So here we'll define two transportation connection points. New thing, for example, I'm giving Godrej 1. This is for Godrej Bangalore transportation connection point. Then what the mode of transport we use? Airport, shipping type, load transport, train, yeah, something. So we use load transport. Yeah, for example, by train to train station. We maintain. Then this transportation connection point, which is in Bangalore, it connected to the shipping point. It's very close to the shipping point. Okay, this point, it's connected to the shipping point also. We go to the shipping point and plan this tab, and we call the shipping point here. Yeah, we have uh, uh, see, this is a shipping point, and inside the shipping point, we have loading point. We maintain the transportation connection point for the Bangalore location and click on save. More transportation connection point we define, which is in Mumbai, where the product is going to deliver. Two connection point. New entry again here. This is Mumbai. Here also shipping point, but that shipping point in Mumbai, not in Bangalore. The loading point also important. The two transportation connection point. One is Bangalore, another is Mumbai. I'm using in domestic shipment process in one location to another. It may be from one country to another country also we do. Now after that back, and then we come to the defined routes and stages. Okay, in route and stages, we have to know important area. Once again, define route and stages. In route and stages, we give the name of routes. In that route, we maintain, yeah, we connect, yeah, assign transportation connection point. Yani Bangalore to Mumbai, what connection point we define, which is assigned under the route. We give the name of routes here, just like the number unity, and give the name of route like Godrej, something. And here, Godrej route. Like here, I'm just giving Bangalore to Mumbai, for example. And here, service agent, you know what is the mean of service agent? Like freight forwarding agent, and the logistics department has one agent who provide the service for delivering the goods. It may be typical example, freight forwarding agent, right? Freight forwarding agent, just like a GT or J, I'm taking any. See, this is a vendor also. It's called supplier also. And mode of transport, truck, train, something. So rail.
Shipping time, if rail, so what is the shipping time? Rail also. Total distance, maybe from Mumbai to Bangalore, it around 1,000 kilometers, for example. In which kilometer? Okay. Relevant to transport, yes, we maintain. Other details manually maintained. Transit time, where the product will be transit, what are the travel duration. Practical calendar basically for calculating the date, like based on working days. This is important. So we have defined the routes, Bangalore to Mumbai with service agent and something. After defining this one, then we click on route and stages here, left side, route and stages. Once you click on route and stages, then there is an option called add new entry. And here we add departure point, Bangalore, we got a point, see, and destination point where the product is going to deliver, that is Mumbai. We maintain. This is the 2 point we add. Same here, the service agent, the same agent we have, not different. Distance also same covered in terms of kilometer, meter, something, and each option is there. Hmm. Shipping time, same like rail. It's maintained. So we have assigned the transportation connection point from the departure zone to destination zone under the routes. We wait. Clear here now? Yes, sir. Hmm. Now we'll back and there is a, see, we have maintained. Now back and there is a one thing. Next here, route determination. In route determination, the most important thing is transportation group for the material master, okay, which is the transportation group. I think if we're seeing when we define the material master, let me come to the material master. Just going to MM02. See, in the material master under the sales general plant data. Okay, under the sales general plant data, if you have seen, see, this is called, this is a part of shipping data. See, and a shipping data you can see, shipping data, transportation group, loading group. It is a part of shipment process. Okay, so this transportation group, actually we have selected a standard from this list, but we have option to define our own transportation group. The transportation group basically is the group for transportation in the grouping of material that has same transport required. Okay, it is the grouping of material that has the same transportation requirement, like by truck, by train, something. This is actually defined in the configuration page here. Under the route determination, see, define transportation. And let's see, this is the transportation group where it maintained, correct? This is actually defined here. Let's see, for example, we define our own new trade, giving 005, and this is for trade, and by rail. This is transportation. We define the transportation group, save, and this transportation group, which is maintained by end user in the material master. See. Now can see what is the transportation group defined? It will be coming here. Correct? This is very important. Material master, what transportation group we have. This is very important. Assign and click on save. Now come to the same transportation group we define. Here, just a minute. Mm, Transportation zone. Transportation zone basically represent the zone based on location. Bangalore, they have own zone. Mumbai, they have own zone. है ना? Define transportation zone. This transportation zone basically defined based on region, based on city, and that is maintained by individual to the customer master. So let's see here, define transportation zone. See, for example, I click on position and type the country IN. So here, see here, south, something, north, something. Yeah, we can create new entries, just like for example in country India. I'm just giving the name transportation zone that is called Bangalore. For example, this is Bangalore. Then we have Mumbai. है ना?
Mumbai. This transportation zone, we see one is Bangalore, another one is Mumbai. We define by consultant, and this is actually maintained by end user in the customer master data, right? Like customer in Bangalore, so this is a Bangalore transportation zone. In customer in Mumbai who receiving the good, their own transportation zone. So we'll see later how to maintain this transportation zone to the customer. We'll complete this configuration. Transportation group we defined, then back, and then there is a maintain country and transportation for shipping point. Maintain country means like in same country, India, we have two transportation zone. One is Bangalore, another one is Mumbai, and both have their own shipping point. Bangalore has one their own shipping point, and Mumbai also has their own shipping point. Okay, so let's see. If we starting, you remember when we have defined the shipping point in two different locations. One is Bangalore, another one is Mumbai. So both shipping point connect to the transportation zone here. So see, maintain country and transportation zone for shipping point. Now, for example, here, nice, sorry, who this one not maintain the details, so this asking. For example, my shipping point, yeah, we have two shipping point, right? This is first one is Bangalore, second one is Mumbai. Okay. So for Bangalore shipping point, we have a transportation zone we defined. This is Bangalore. And Mumbai shipping point, we have another transportation zone we defined, that is correct. Okay. That's this. Clear? Shipping point, now what is the mean of shipping point? The place from where product will be dispatched and moved to the customer. That is your shipping point. So in this shipping point, we maintain the transportation zone based on location. One is Bangalore, another one is Mumbai. Now click on this. This now, we have completed. Then there is a weight group basically used for determination of total weight of the product material. Like in logistics department, if a product we are loading in the transport, what is the actual weight? Based on that, they will calculate the freight charges. Freight charges, loading charges, basically based on weight of the material. है ना? How much weight of the material? This is the part of freight charges. So there is some criteria category to weight with 1 kg up to 10 kg up to 100 kg. Suppose you want to create your own weight group, the copy, है ना? Just like a 0.9 up to 10 kg, right? We maintain and click on. This is different. 10 kg. This is defined. So now these all are maintained. And after, again, I'm repeating. है ना? For example, I come to the defined route, mode of transport, shipping type, connection point we define for two in Mumbai and Bangalore. So that we come to the route and stages and maintain the connection point to the routes. Then coming to the defined transportation zone, which maintain to the customer master, we'll see. Country and transportation zone for shipping point, both transportation zone connected to the shipping point. Transportation group, basically for the material master, we use by truck, by train, something. And weight group, basically for charges, delivery and freight charges. After completed this configuration, we come to the main connectivity of the routes. This is the last step and very important to maintain the route. Okay. So we'll go to the maintain route determination. So finally, we have reached on the end of the configuration where we set the route determination in sales order. Okay. So let's here see maintain route determination and nutrition in country India.
What is the departure zone? Bangalore. From where? Bangalore. Destination, same country, but receiving zone in Mumbai. Right? We connected. Okay, departure zone, receiving zone, both in the same country. After maintaining this, then select the line. Left side double click on determination of route without weight group in order. Sales order, we don't have required the weight of the material. Okay, while doing the delivery process, that time weight is important. If you remember, what the importance of this, tell me. In material master, if you go to the basic data, this is the weight, gross weight, net weight. When this weight group maintained and when we create the order, this weight will be considered by system in the sales order. And what purpose this weight should be maintained the material master, gross weight and net weight, purpose of freight, loading charges. So this is the one of the important. And here system asking route determination without weight group, so we don't have. But when we go to the delivery process, that we have required a weight group. First, we select the route determination without weight group and new entry. Now here, shipping condition. We have shipping condition, the customer, what we have, standard, immediate, same we maintain. Transportation group based on material master. I think we have material master, we maintain this transportation group, guarded by rail 205. Maintain shipping condition from customer, transportation group from material, and routes. Which routes? We define the routes here. That is guarded to maintain. We have assigned and click on save. After that, we go to the without weight group, so we don't have required the weight of the material maintained here. But when we go to the route determination with weight group, new entries, and here same shipping condition, standard transportation group based on material master 005. But here system asking total weight up to 10 kg, up to 1 kg, so 10 kg for example. And route also here and click on save. We have completed this configuration. Okay. And route determination in delivery process. Let's see, I go back here. Define route determination by delivery type. So in delivery type, which one delivery type we use? LF. LF is standard. So here, route determination is B with check, new route determination without check, with check, with which we have with check or without check. So we basically with use the with check, route determination with check. Check means transportation zone, loading group, transportation group. These are not checked by system. So now we have completed. And in the route determination process, let's see, the customer who placed the order in Bangalore, right? Customer who order, let's see, sold to party, sold to party, and customer who received the good, shipped to party. Okay, sold to party in Bangalore, for example, he is Bangalore, and shipped to party, he is Mumbai, yeah, receiving the good. So in customer master, have you seen this partner function? Like partner determination procedure, we have all the partner function. Let's see, for example, I'm going to the customer master BP. So, see, customer master, the customer role, sales and distribution. See, the customer master and the partner function. See, this customer playing the role of sold to party also, ship to party also, bill to party, and pay also. But suppose, just assume, customer is a sold to party in Bangalore, 1005. But the customer who receiving the goods, that is shipped to party in Mumbai. Maybe this customer shipped to party ID will be different, not same, right? I am the sold to party in Bangalore, but you receiving the goods in Mumbai. So your ID will be different, my ID will be different.
right? Hello. Yes, sir. So we need to create and maintain one customer who playing the role of ship to party, and that ship to party ID will be assigned here. So let's see. I'm going to create a business partner, BP transaction code, create organization, select the like this customer is individual, like you're the customer. Amit Kumar in Mumbai, है ना? This is Mumbai. Okay, just ship to party receiving the good by transaction, postal code, address, country, and region 30 last, and other details language. And here in the customer in the general data, see this is the address details, right? Here also we have transportation zone. We have how to where to find the transportation zone? So click on this button, more field. When you click on more fields, then there is a transportation zone cover. Here we assign the transportation zone. Same we assign to the customer in Bangalore also. See this is Mumbai, so we went to the here auto assign simple in address area. There is a more field. Click and there is a transportation zone and click on save. Now save. This ID will be generated by system. Then click on display to change and select the next role, that is FLCU00 Customer Finance, and then click on company code. Now company code TRJ printed. Other detail reconciliation account is important. The customer payment account and terms of payment and click on save. And then select the another role, FLCU01 Customer Sales and Distribution. Click on Sales and Distribution. Other detail maintain. Now this customer is playing the role of which ship to party. Shipping condition also important here. Shipping condition standard, you can see this is important. Billing like Incoterms and here is mobile. Terms of payment same. And he only playing the role of ship to party. Ship, ship to party. Click on same. 1020 is a ship, right? So just I give it. See here, both are different. Sold to party in Bangalore, ship to party in Mumbai. So now here, what we do, this is a ship to party, and this ship to party detail will be assigned to the customer sold to party. Now you can see, I'm going to the BP transaction code again. I'm searching the customer sold to party here. Okay. Now here in the customer, first I come to the customer general data for the sold to party. Here also we maintain the transportation zone. Click on more field. This is in Bangalore. What is the transportation of Bangalore here? Maintained. Mumbai to be already maintained. Bangalore we maintained. Now. And now I'm selecting the customer role in sales and distribution. And click on sales and distribution. And in the partner function, see customer playing the role of sold to party, but this party will be different. Now clear? Sold to party and ship to party both have different ID. Is in Mumbai. Clear now? Yes, sir. Hello. Yeah. Means I am the sold to party, you are the ship to party receiving the goods. So when we create the order, I I am the playing the role of sold to party, but in delivery process you are the ship to party. Let's see how it comes. I'm going to create a sales order.
VA01. That's the order type. Sales organization distribution channel division. Enter. And here, let's see customer. I think 1 second. Let me check who the customer we have. Otherwise, mhm, hold on. 1005. Okay. So here I'm coming to the order. When you call the customer ID 1005, enter. Okay. So what system will do? System will take the shift to party 1020. See here. Sold to party 105 1020 shift to party. Okay. And when you click on display header details, under the shipping tab, shipping condition important standard. Now below I'm calling the material 7151, quantity 10 pieces, enter, enter again, enter again. And select the line, double click, see the material, sales fee, hmm, price list type, wholesale, bulk buyer, something, hmm, and shipping. On the shipping tab, automatic system will take the routes here. You know, this is system will take the route based on customer shipping condition and transportation zone plus transport group from the material master. Right. This is automatic system will take the ship routes here. Here, other details will remain same. Nothing change. Schedule line, everything fine. Date of delivery maybe not today. Today is Sunday, right? You know why system not accepting the date of delivery today? Calendar we defined, no? Huh? Which one? Factory calendar we have defined. Sunday is holiday. Correct. Yeah, practical. Based on practical. The system taking the date of delivery, not today, tomorrow, because Sunday not working day. We have maintained and click on save. So these routes determined by system under the shipping tab based on shipping condition from customer, transportation zone from the customer like sold to party, ship to party, and transportation group from the material master. This all are playing the important role to determination of routes. Here, save the order. Actually, it's asking some of the information missing. You click on edit, in completion log. But store location is important. Asking the store location. The order we have shipping type, we maintain the route. And in once complete the order, we come to the delivery process. VL01N. Okay. Date of delivery we can maintain according to scheduling. This is not 21, 22. Okay. Then shipping condition point, delivery type, and enter. Here also, let's see, click on shipment. Sorry, select the line, double click, and under the see, this is a ship to party who receiving the goods. Transportation group, this is we have maintained, right? But when you come to the main page and there is a header, click on header details. In the header detail, hmm, under the shipment tab, see the shipment tab and who the customer receiving the goods, Mr. Amit Kumar in Mumbai. This is the routes. Automatic system will determine. Okay, route will be taken by system. Shipping type, shipping and standard, but shipping type we can maintain like here manually. This is all we have. Correct. So this is the process of route determination in customer master. Sorry, customer who has different zone, delivery Mumbai and Bangalore, and customer when he place the order, he is a sold to party, but the person who receiving the good is shipped to party. Based on that, system will determine the routes. So now it's clear. Okay. So we'll take the then another topic today. And this is actually you have seen what shipping type routes and what shipping and that very important. See, not only this sales and distribution, we do the configuration. That is the part of logistic execution also.
Okay, see, going to show you in the logistic SPRO in SAP reference IMG under the logistic execution. The logistic execution can here shipping and there is a see where the option one second not shipping and there is a 1 minute. Just I'm checking the logistic execution also we have option in shipping and deliveries. I think delivery no. Well, let me check the under the shipping basic shipping function. See here, this also we have option in route. So both logistic execution and SD both have responsibility to define the route determination. See, define routes, route determination. Okay, and here also we have shipping point, receiving point, and see in the shipping point we have shipping condition also, loading group. All these are all part of logistic execution. Clear? So let's say then we're going to go to the next topic. This topic called availability check. So just give me 2 minutes and I'm coming back. I just need to put the charging laptop. Coming in 2 minutes, okay? Okay, Yes, sir. Prasanna? Yeah, Yes, just sir. a minute. Hmm. Hello. Yes, sir. Can I take a 5 minute break because I have some urgent call, so I'm coming, huh? So we can Yes, sir. continue this other please. Okay, sir.
Yes. So now we continue. Okay. Fine. Okay, sir. Yes, sir. Ah. So availability check. Availability check means what? Like when a customer who place the order of a particular material with certain quantity. For example, customer order one product with 100 quantities. So when he place the order for the material with quantity, what system will do? System will check the quantity which are available in warehouse or not. This is called availability check. If you remember in Material Master, we have option to availability check. Okay. See, under Material Master, sales general plant data, there is a second. This option we have enabled availability check. Daily requirement. Daily requirement means like a customer place the order based on requirement in daily basis. Every order system will perform the availability check. For example, you order 100 quantity, system will perform the availability check. Okay. And in material, where we check the stock, so MMB transaction code and this material master number, plant, store location. Now tell me in the material stock overview, click how much quantity here? For example, 853. So till 853, we can accept the order, right? If customer order more than 853, what will happen? Can we do the process of delivery more than 853 quantity? Tell me. No, it will check availability. But here, suppose you have not Partial limit. assigned this, we have not assigned this daily this option here. Just listen again. We have not No, assigned no, this ability. If you assign, if not assign this ability check option here, just let it remove. So what system will do without checking the quantity in warehouse? The system will confirm the order and delivery process. System will not check. System will not check 100 quantity hai ya 200 hai ya 1000 hai. System will confirm. But what will happen when we do the process of delivery? Delivery will be failed. ठीक है? यानी सिस्टम ने क्या किया कि बिना चेक किए कंफर्म कर दिया क्योंकि हमने ये ऑप्शन ही नहीं दिया सिस्टम को नॉट गिवन द ऑप्शन टू द सिस्टम टू चेक तो ऑर्डर तो कंफर्म हो गया बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी फेल्ड क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है ऑर्डर में और अवेलेबल क्वांटिटी कम है तो इसी द ड्रॉबैक ठीक है तो व्हेन वी क्रिएट द ऑर्डर है ना फॉर दिस मटेरियल लेट्स सी आई एम गोइंग टू क्रिएट ए वन ऑर्डर देन आई शो यू create an order for this material for this customer to 853 quantity we can confirm the order more than 850 like 854 या 900 या 1000 for example when taking the quantity enter अच्छा easily हाँ see what happened we're taking total quantity is showing 812 okay but you order more than 812 यानी 188 quantity difference is right here yes, तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सिस्टम कंफर्म ओनली 812 क्वांटिटी ऑन दिस डेट ऑफ डिलीवरी कितने क्वांटिटी है तो वी कैन डिलीवर बट रिमेनिंग 188 क्वांटिटी दिस इज डिफरेंट क्वांटिटी यानी कि तुमने ऑर्डर किया 1000 क्वांटिटी बट ओनली 812 क्वांटिटी अवेलेबल तो रिमेनिंग डिफरेंट 188 क्वांटिटी वी कैन नॉट डिलीवर ऑन दिस डे वी कैन डिलीवर ऑन 25th व्हाई 25th कि जब हम मटेरियल मास्टर में एक ऑप्शन हमने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टेल मी MM02 एंड मटेरियल मास्टर MRP1 MRP ये हमने मेंटेन किया था ना MRP1 MRP2 करेक्ट yes, तो देखो यहाँ पे MRP1 में हमने क्या किया कि सिस्टम में ये ऑप्शन दिया प्लान यानी हमने सिस्टम को बोला कि अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट को खबर जाना चाहिए इंफॉर्मेशन जाना चाहिए
कि अगर मटेरियल नहीं है तो उनकी प्लानिंग होगी कि प्रोडक्शन स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, हमने 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर लिया, बट मेरे वेयर हाउस में 800 क्वांटिटी है, तो हम सिर्फ 800 क्वांटिटी ही डिलीवर कर सकते हैं कस्टमर को। 200 क्वांटिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर उसको कब डिलीवर करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सिस्टम को कहा कि इन्फॉर्म करो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि रिमेनिंग 200 क्वांटिटी दे विल मैन्युफैक्चर। तो एमआरपी वन में दिस इज द प्लानिंग, है ना? अगर हमने प्लानिंग मेंटेन किया तभी वो प्लानिंग करेंगे, नहीं तो नहीं। और एमआरपी टू में देखो यहाँ पे इन हाउस प्रोडक्शन कितना दिन लगेगा? 3 दिन लगेगा, मान लो कि 3 दिन, या मान लो एग्जाम्पल 7 डेज, हमने 7 डेज दे दिया, 5 डेज जो भी दिया, तो ये 5 डेज दिया, इंटर किया, यानी कितना टाइम लगेगा? आज हमने उनको इन्फॉर्मेशन भेजा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि इतनी क्वांटिटी का डिफरेंसेज आया है, आपको बना के देना है, तो वो बोलेंगे 5 दिन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 दिन। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से देखो, अब आते हैं फिर से सेल्स ऑर्डर पे। हाँ, VA01 क्रिएट ऑर्डर, कस्टमर, सीरियल, 1000 क्वांटिटी, इंटर। है, देखो 22 से 5 दिन कैलकुलेट करो, कितना दिन लगा? 27 तारीख। ठीक है, क्यों लगा? क्योंकि हमने इसमें मटेरियल मास्टर में ये मेंटेन किया। देखो यहाँ पे फिर से उसमें आ रहा है ये नहीं, कि यस सर। यहाँ 5 दिन लगेगा उन्होंने कहा। तो यहाँ पे सिस्टम बोल रहा है इतनी क्वांटिटी तो हम डिलीवर कर देंगे ऑन द डे, बट रिमेनिंग 188 क्वांटिटी इट टेक टाइम फॉर 5 डेज फॉर प्रोडक्ट। तो ये 27 को होगा। ये सारा बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो एक काम, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बोलते हैं इसको, ये एबिलिटी चेक में दो ऑप्शन होता है, देखो, बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ओके, एंड दैट इज वन मोर, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। बड़ी सिंपल सा है समझने के लिए। बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ऑर्डर डेट एंड डिलीवरी डेट, यही हो ना? ऑर्डर दिया, डिलीवरी कब होगा? तो ऑर्डर डेट कब है? आज कितना है? 21 फर्स्ट सेप्टेम्बर। एंड कब डिलीवरी चाहिए? मान लो कि 25 को। ओके, क्लियर? तो बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि ये तुमने आज ऑर्डर दिया और सिस्टम डायरेक्ट कंफर्म कर देगा और तुरंत डिस्पैच हो जाएगा और प्रोडक्ट चला जाएगा डिलीवरी के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि तुमने ऑर्डर दिया और तुरंत प्रोडक्ट निकल के तुम्हारे पास आ गया। टाइम लगेगा, करेक्ट? क्या यस। टाइम लगेगा? देखो यहाँ पे टाइम ये लगेगा कि सबसे पहले आई कम टू द शेड्यूल लाइन एंड देयर इज शिपिंग टैब। सिस्टम क्या बोलेगा? पहले कंफर्म करेगा मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अवेलेबल है, कंफर्म कर दिया ये इतनी क्वांटिटी है, मान लो 22 को 812 क्वांटिटी है, तो कंफर्म कर दिया। अब जैसे ही कंफर्म हुआ, वंस इट कंफर्म, इट टेक टाइम, पिकिंग पैकिंग का प्रोसेस होगा, है ना? वेयर हाउस में दिस इज कॉल्ड मटेरियल स्टेजिंग टाइम। स्टेजिंग टाइम मीन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पिकिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि तुरंत बाहर पिकिंग पैकिंग के टाइम लगेगा, पैकेजिंग के लिए टाइम लगेगा। वन पिकिंग पैकिंग इज डन, देन नेक्स्ट स्टेप भी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ऐसा नहीं है ना कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रक खड़ा हुआ है या जो भी है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस में है और हम उसमें लोड करना शुरू कर दिए, नहीं। प्लानिंग होगा। प्लानिंग मीन्स विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी यूज, वे द ड्राइवर ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट। तो वो सारा प्लानिंग होगा कि उसको अवेलेबल करवाना, तो इट मे बी टेक टाइम, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। वंस इट कंफर्म, देन लोडिंग द गुड्स इन द ट्रांसपोर्ट। फिर लोडिंग में भी 1 दिन लग जाएगा, हो सकता है 1 दिन लग जाए, और फिर गुड इशू डेट, यानी फाइनली वी इशू द गुड्स। तो ये बैकवर्ड शेड्यूलिंग में क्या होता है, देखो, कि सबसे पहले क्या करेगा, फ्रॉम 25th सिस्टम विल कैलकुलेट द डे, जैसे बैकवर्ड बैक में आता रहेगा,
यानी कि एक दिन लगा बोलते को। देखो बैक से स्टार्ट करते हैं। गुड इशू, गुड इशू, उसमें कितना लग गया टाइम, एक दिन। ठीक है, उस गुड इशू से पहले क्या हुआ, लोडिंग। बैकवर्ड बैकवर्ड में जा रहे हैं ना। लोडिंग, लोडिंग में कितना लगा, वन डे। ठीक है, फिर उससे पहले क्या है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग। ठीक है, मान लो इसमें 2 दिन लग गया। ठीक है, फिर मटेरियल पिकिंग पैकिंग है ना, मटेरियल स्टेजिंग, मटेरियल स्टेजिंग मतलब पिकिंग पैकिंग। ठीक है, या इसमें 2 दिन लग गया या एक दिन लग गया फर्क। तो कितना दिन हो गया टोटल, 1 2 2 to 4 5। तो अगर तुमने ऑर्डर दिया आज 21st को, तो कितना दिन लगेगा, 5 डेज। ठीक है, मान लो कि अगर टोटल 4 डेज लग रहा है, तो यहाँ 21st से 4 डेज अगर कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो। 21st से 4 डेज टोटल लगा तो कितना दिन हुआ, 25th को हो गया। ठीक है, यस। यानी कि फॉरवर्ड बैकवर्ड शेड्यूलिंग में कंफर्म हो गया कि इतने दिन में हम कर देंगे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। अब बोलो कि अगर क्वांटिटी नहीं है वेयर हाउस में, तो क्या उतनी टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। करेक्ट, हो सकता है गुड इशू में 3 दिन और लग गए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है कंप्लीट। तो अगर इसमें अगर डेट बढ़ जाता है, मान लो कि ये तो मैच कर गया, मगर इसमें क्या हुआ, 3 1 4 2 7, 7 दिन हो गया। तो 7 दिन में क्या हो गया, मतलब कि 4 दिन में 25th हो रहा है। करेक्ट, तो 7 दिन में कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 20। करेक्ट, ये हो गया फॉरवर्ड शेड्यूल। यानी अगर डेट मैच नहीं करता है डिलीवरी का, तो न्यू प्रपोज ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी डिफाइंड, यानी 28, यानी आगे बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग अगर मैच कर गया तो ठीक है, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ जाना। तो ये कब होता है, जब मटेरियल अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, व्हेन मटेरियल नॉट अवेलेबल, देन इट टेक टाइम, तो फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, विल सी। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन इन मटेरियल अवेलेबिलिटी चेक, ये हो गया ऑर्डर डेट, ऑर्डर इशू डेट, ट्रांसपोर्ट डेट, था हमने अभी डिस्कस किया। चेकिंग ग्रुप, चेकिंग ग्रुप में व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, है ना। वी हैव ए विच रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। डेली रिक्वायरमेंट मतलब every time this date system will customer will order and system will perform the ability check. तो डेली रिक्वायर हो गया बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक। एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट यहाँ हो गया कि एडवांस ऑर्डर, कभी कभी होता है ना एडवांस में ऑर्डर लेते हैं, जैसे तुम्हारे केस में क्या है, सर्विस प्रोडक्ट में एडवांस पहले ऑर्डर लेते हो, है ना, उसके बाद वो कौन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है। करेक्ट, यस। यस। हाँ, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, यानी एक इंडिविजुअल कस्टमर का रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ये हो गया एडवांस ऑर्डर के लिए, ये हो गया एग्जिस्टिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन एक्टिवेट होना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड चेकिंग। तो विल गो टू द कॉन्फ़िगरेशन पेज एंड सी SPRO, then SAP reference IMG, then sales and distribution, basic functions, availability check, and transport requirement. Then availability check. Then availability check with ATP. ATP मतलब ATP means availability to promise. Availability to promise means I'm promising to you to I will deliver the goods on your desired date of delivery. यानी हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि तुमने जो ऑर्डर किया वो जिस दिन को डिलीवरी चाहिए उस दिन हम डिलीवरी करें। ठीक है, कमिटमेंट, आई गिविंग द कमिटमेंट टू दिस कस्टमर, ability to promise. Now here we have defined checking, ability checking group. In ability checking group, see है ना, 01 daily requirement, 02 individual requirement, both should be active mode.
क्योंकि सिस्टम एक्टिव मोड में रहेगा तभी वो सिस्टम परफॉर्म करेगा. वी सेलेक्ट द एक्टिव मोड. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, checking group we have maintained daily requirement, individual requirement, and active mode, not inactive, active mode. Now next, configuration. Configure default value for ability checking group. अभी यहाँ पे ले लो कि हम जब भी मटेरियल क्रिएट करते हैं तो सिस्टम क्या करता है बाय डिफॉल्ट. सॉरी, सिस्टम गिव द ऑप्शन टू यू टू मेंटेन विच एबिलिटी चेक. यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछता है, सिस्टम आस्क टू यू विच एबिलिटी चेक यू वांट, डेली रिक्वायरमेंट और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट. यू हैव a मैनुअल सिलेक्शन क्राइटेरिया हियर, या तो 01 या 02. ठीक है, मैनुअल सिलेक्शन, राइट हियर. बट यहाँ पे व्हेन यू कम टू दिस पेज, व्हाट सिस्टम टेलिंग, डिफॉल्ट वैल्यू मतलब कि whenever we create a material for this plant, for this material type, system will check the default value is the daily requirement, individual requirement. Let's see, for example, I come to the new entry, material FER, ठीक है ना, plant GD P1 and 01. मतलब कहने का है कि जब भी हम ये मटेरियल क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग दिस मटेरियल टाइप फॉर दिस प्लांट, बाय डिफॉल्ट दिस सिस्टम विल टेक द वैल्यू डेली रिक्वायरमेंट द मटेरियल, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा. नहीं अगर देंगे तो मैनुअल सिलेक्शन है, यहाँ पे हम मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा. ये दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड कॉन्फ़िगरेशन वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट, वी हैव कॉन्फ़िगर स्कोप ऑफ एबिलिटी चेक. स्कोप ऑफ एबिलिटी चेक मीन just like we have, this is the checking group. ठीक है, अभी देखो ये वाला हमने सेलेक्ट किया और इसी को इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शंस, ठीक है ना, विथ सेफ्टी स्टॉक, ये सारे. तो देखो जब भी हम मटेरियल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है अवेलेबिलिटी, क्लियर पे देखो, यहाँ पे ये सारे चेकिंग स्कोप ग्रुप है. वन सेकेंड, स्कोप ऑफ चेक है ना, यही वाला, ठीक है. ठीक है, ये सारे स्कोप ऑफ ग्रुप है, डिपेंड ऑन जो रूल विच रूल वी हैव सिलेक्टेड. तो यहाँ पे चेकिंग रूल, यहाँ पे ये चेकिंग रूल A1 है और चेकिंग रूल A है, देखो ये पे, ये वाला है ना, दिस इज डिपेंड करता है. अब क्या बोल रहा है सिस्टम, अभी जैसे चेकिंग रूल ले लेते, ये वाला विथ सेफ्टी स्टॉक. सिर्फ विथ सेफ्टी स्टॉक मतलब क्या होता है, कि क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी अर्जेंट रिक्वायरमेंट आ गया और स्टॉक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्टॉक एज ए सेफ्टी मोड में रख देते हैं, वी कीप द स्टॉक इन सेफ्टी मोड. तो whenever some urgent requirement come, we can take out this stock quantity from warehouse to deliver the customer. So ये safety stock option will be maintained in material master under the MRP. One second, huh? Just MRP2 tag. One second. MRP2 सी है ना, सेफ्टी स्टॉक. मान लो कि तुम्हारे वेयर हाउस में 800 क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ स्टॉक को हम एज ए सेफ्टी मोड में रख देंगे, 10 क्वांटिटी, ठीक है, वो सेफ्टी मोड में रहेगा, जब अर्जेंट रिक्वायरमेंट आए तो वो वहां से निकालेंगे, इसको सेफ्टी स्टॉक, ठीक है. नाउ लेट्स आई एम कमिंग टू द MMB मटेरियल प्लांट स्टोर लोकेशन स्टोर. यहाँ पे देखो 853 क्वांटिटी है, इससे पहले कितना था, ज्यादा क्वांटिटी था, 10 क्वांटिटी एज ए सेफ्टी मोड में चला गया, ठीक है, क्लियर. ये हो गया कॉन्सेप्ट सेफ्टी स्टॉक विथ ब्लॉक. ब्लॉक स्टॉक मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि आगे एज ए कंपनी में दो एम्प्लॉय है जो ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ये कंपनी, यू हैव टू सेल्स एम्प्लॉय हु हैज रोल टू क्रिएट द सेल्स ऑर्डर. तो तुम पहले आए, तुमने एक ऑर्डर क्रिएट किया 100 क्वांटिटी का, ठीक है, वो 100 क्वांटिटी ब्लॉक हो गया तुम्हारे लिए. अब वो 100 क्वांटिटी कोई और नहीं उठा सकता, ठीक है. मान लो कि 500 quantity है, just take the example, you have in warehouse 500 quantity and you
order for 300 quantity, for example. The 300 quantity is blocked for that user. So remaining 200 quantity can order by other customers. Okay, अगर उससे ज्यादा होगा, एक सिंगल क्वांटिटी भी होगा तो सिस्टम नहीं लेगा, क्योंकि 300 क्वांटिटी ऑलरेडी ऑर्डर में ब्लॉक हो गया है. रिमेनिंग only 200 quantity allowed. This is a blocking system. So this is called block stock. Or अगर when we don't have stock available, then we send the request to the which department for manufacturing the goods? Production department. So in the production department, they will send the request to the purchasing department. If raw material not available, they will send the purchase requisition and they will manufacture the goods. तो ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इंटीग्रेशन हुए. तो दिस कॉन्सेप्ट. नाउ कम बैक एंड देयर इज ए डिफाइंड प्रोसीजर फॉर रिक्वायरमेंट क्लास. रिक्वायरमेंट क्लास क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ रिक्वायरमेंट क्लास? आई टेल यू. रिक्वायरमेंट क्लास इज नथिंग लाइक ए क्लास फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रूट्स, फॉर अबिलिटी चेक. यानी कि चेक करता है कि मटेरियल अवेलेबल है तो कंफर्म करो ऑर्डर, नहीं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेज दो. ठीक है. रिक्वायरमेंट क्लास इज रोल ऑफ finding the stock quantity, whether available or not, then send the request to the production department. So here defined procedure for requirement class, we have 41. This is called at the time of order, at the time of delivery, we send the request to the production department. ठीक है. Order में confirm तो it's fine. Otherwise delivery में it will be not possible to completely confirm the process because lack of quantity. ये ऑप्शन actually for enable in the system for checking the stock quantity available, not available, then send the request to the production part. ये option we have in the sales order page. Here in the main page there is procurement tab. See, 011 भी है और we have 041. इस सिर्फ डिलीवरी रिक्वायरमेंट है. 041 डिलीवरी ऑर्डर दोनों रिक्वायरमेंट, यानी ऑर्डर के टाइम भी डिलीवरी के टाइम भी. है ना? क्या बोल रहा सिस्टम कि 812 quantity only deliver on this date, remaining quantity will be delivered on 26. ठीक है, इतना क्वांटिटी नहीं है. ठीक है. ये ये एनेबल है कि इससे सिस्टम विल फाइंड द स्टॉक नॉट अवेलेबल, देन सेंड द रिक्वेस्ट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे देखो, इट्स सी फर्स्ट ऑप्शन इज अबिलिटी चेक एक्टिवेटेड. अगर अबिलिटी चेक फेल हो गया, यानी क्वांटिटी इफ नॉट अवेलेबल इन द वेयर हाउस, तो क्या करेंगे? वी सेंड द रिक्वेस्ट, जिसको रिक्वायरमेंट सेंड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट for manufacturing the goods. This option should be activated here. Now, next option, define ability check procedure for each schedule and category. Yani we assign the schedule and category whether it's allowed to ability check or not. So we'll come to the schedule and category, which one? CP. CP is the schedule and category for standard order. यहाँ पे we have option selected availability checkbox. Okay. यानी कि सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम विल परफॉर्म द अवेलेबिलिटी चेक. If available, confirm the order and delivery process. If not available, then we send the request to the which department? Production department. उसको बोलते हैं transfer requirement. We send the transfer of requirement to the production department for manufacturing the goods. Clear? ये concept. हाँ. So now here, this is the under the part of SD. But how production department will find the what requirement of the order? आपका कस्टमर का कितना ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट में आया, हाउ दे विल चेक? दे हैव वन ट्रांजैक्शन कोड MD02. ठीक है, MD02 इंटर मटेरियल प्लांट एंड इंटर. फर्स्ट एक्टिवेट दिस वन, देन बैक MD04. अब यहाँ पे देखो, द मटेरियल प्लांट इंटर. अब यहाँ पे देखो, कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड कस्टमर ऑर्डर. कस्टमर ऑर्डर है ना. सिस्टम में ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल फाइंड द स्टॉक. एक ऑर्डर आया था 21 को. अच्छा देखो, सेफ्टी स्टॉक में भी मेंटेन कर दिया हमने.
ओके, 10 पीसेस सेफ्टी स्टॉक, टोटल 853 क्वांटिटी था, what out of 853, 843 quantity showing 10 quantity in the safety mode, right? And this is the order, sales order है ना, this is the sales order, this is sales order, and system will perform the availability of the stock, जो भी स्टॉक है तो कंफर्म करते चला जा रहा है सिस्टम। ठीक है, क्लियर? अभी हमने 25 का लिया, तो ये इसमें हो गया शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में, है ना, ये सारे सिस्टम विल परफॉर्म। यहाँ पे कस्टमर पे जाएंगे, क्लिक ऑन कस्टमर, इट शो द कस्टमर नेम। ओके, वेंडर तो वेंडर तो है नहीं यहाँ पे, वेंडर तो सप्लायर उसमें होगा। हाँ, तो ये ऑप्शन, ठीक है, क्लियर? The system will perform the ability check based on requirement, and MD04 in the production department find the total stock quantity। अब यहाँ पे अगर टोटल स्टॉक है तो दैट इज फाइन, वी कैन कंफर्म द ऑर्डर। देखो यहाँ पे व्हेन कम टू द सेल्स ऑर्डर, वन सेकेंड, तो 1000 क्वांटिटी हमने लिया, लेकिन अगर हम 100 क्वांटिटी लेंगे तो सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम कंफर्म कर दिया क्योंकि क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन जैसे हमने 100 क्वांटिटी से ऊपर लिया या 800 से लिया, 900 भी ले लिया, तो क्या करेगा सिस्टम? सिस्टम बोलेगा ये इतनी क्वांटिटी इतनी ही अवेलेबल है, रिमेनिंग क्वांटिटी वी कैन डिलीवर ऑन 26 या 27, और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलर्ट चला जाएगा, राइट? क्लियर? तो यहाँ पे न्यू डेट ऑफ डिलीवरी डिफाइंड बाय सिस्टम, सिस्टम ने नया डेट ऑफ डिलीवरी ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, quantity is not available, then system will perform the next date of delivery. And this next date of delivery will be taken by system. We enable this option to the sales document header level. So VOVA transaction code enter, and I select the order type GT, है ना, दे लीजिए सी proposed delivery date। proposed delivery date means अगर delivery date is not match, यानी delivery date नहीं मैच होता है, तो सिस्टम क्या करेगा? नया डेट ऑफ डिलीवरी प्रपोज कर देगा। करेक्ट, नया डेट ऑफ डिलीवरी प्रपोज करेगा मतलब कि 22 को नहीं होगा, 27 को होगा, बिकॉज ऑफ नो क्वांटिटी अवेलेबल इन वेयर हाउस। दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी चेक। अगर अवेलेबिलिटी चेक इज फेल, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर रिक्वायरमेंट। वन सेकेंड है, जस्ट हाँ, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर रिक्वायरमेंट, यानी वंस अवेलेबिलिटी concept fail, ability check is failed, then transfer requirement means with requirement sent to the planning department in production। And there two type of requirement again there, individual requirement, यानी कि for advance order process, एडवांस ऑर्डर मतलब लिया तब उसके बाद डिलीवरी प्रोसेस करेंगे, यानी कस्टमर का पहले ऑर्डर लेंगे फिर उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और कलेक्टिव रिक्वायरमेंट मीन यानी कि डेली बेसिस को ऑर्डर, कस्टमर को, जो रेगुलर कस्टमर वो ऑर्डर सिस्टम विल परफॉर्म। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? प्लांट, फॉर विच प्लांट, स्टोर लोकेशन, बैच मतलब बैच वाइज, है ना, जैसे कि होता है ना कि प्रोडक्शन कैपेसिटी एक दिन में 100 क्वांटिटी का है, तो वन बैच में 100 क्वांटिटी, सेकेंड बैच में अनदर 100 क्वांटिटी, दैट्स टू बैच। डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिक्वायरमेंट क्लास। तो यहाँ पे वी हैव टू गो टू द दिस फोर ऑप्शन वी हैव टू नो। रिक्वायरमेंट क्लास इज कंटेन्स ऑल द प्लानिंग कंट्रोल, यानी वो प्लानिंग कंट्रोल करता है कि व्हाट रिक्वायरमेंट, डेली बेसिस पे या इंडिविजुअल बेसिस, और व्हाट, based on that they will do the planning। Requirement class and requirement type also is one of the control for requirement class, and in the schedule and category we maintain the transfer requirement, and checking group which one, daily requirement or individual requirement, this four option will the first requirement class। So we back to the system, and again go to the SPRO, then SAP reference IMG, then sales and distribution, basic function, ability check and transfer requirement। Now come to the transfer requirement, ability check failed, यानी अब क्वांटिटी नहीं है, तो ट्रांसफर ऑफ रिक्वायरमेंट गोज टू द प्रोडक्शन। तो ट्रांसफर रिक्वायरमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लास N41 है ना, सी, यानी बेस्ड ऑन ऑर्डर, बेस्ड ऑन डिलीवरी,
whether system will find the quantity or not. Not find, we'll send the request to the production department. This option should be activated here, 041. And there is a requirement type. Requirement type is control the requirement class. देखो 041 is a requirement type assigned to the requirement class. दोनों को the requirement type control the requirement class. So we requirement class assigned to the requirement type here. Hmm. And there is a defined procedure for each schedule line category. Procedure for each schedule line category means for schedule line category, we have ability check option is activated here, right? अगर ability check is failed, then transfer requirement is started. यानी कि जब quantity नहीं है, तभी transfer requirement goes to the production department and they will start manufacturing the goods. This option and हाँ block delivery block. Delivery block means suppose you have not cleared the last payment. है ना? I have given the credit limit for you 1 lakh. You all 1 lakh utilize. But when you go to the next order, we accept the order, but in delivery we will block. The reason why will we block? Your payment Payment. Sure. not done. This option I think you have seen, है ना? Yes. है. Oh, you can go it. एक मिनट. यहाँ पे you can option see here in material also है डिलीवरी ब्लॉक ऑप्शन. ठीक, क्योंकि हमने ऑर्डर लिया, कंफर्म किया, लेकिन देखा कि इसके कस्टमर का पेमेंट नहीं हुआ, तो हमने ब्लॉक कर दिया. जैसे अब मान लो कि हमने यहाँ क्रेडिट लिमिट करके ब्लॉक कर दिया, ठीक है. एंड जस्ट टेक एग्जांपल, अभी कुछ इंफॉर्मेशन मेंटेन कर ली. जब हमने ऑर्डर क्रिएट किया, ठीक है, और मैंने ब्लॉक ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर. डिलीवरी ब्लॉक ऑप्शन मैंने एक्टिवेट कर दिया. क्लिक ऑन सेव. ऑर्डर हैज बीन क्रिएटेड. देन विल गो टू द VN01 एंड फॉर डिलीवरी प्रोसेस. ठीक है, अब हम यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस में आए, इंटर किए, तो क्या बोलेगा सिस्टम. सिस्टम से सेल्स ऑर्डर इज ब्लॉक. रीजन इज क्रेडिट लिमिट. तो ये कॉन्सेप्ट इज फॉर ब्लॉकिंग द डिलीवरी बेस्ड ऑन region. So this is actually defined here. Clear? And maintain requirement for transfer requirement means like this is the taking the requirement availability of the stock. This is the routine which is written by ABAP team. See, setting the okay, and click on post text. See, this is the routine has program. User check for specific function from a sales stock. Yani system will check the confirm quantity in the order. This is a routine. See, I'm selecting the routine again, and there is an option called source text. This is the program is written by ABAP team कि अगर quantity is available, then we confirm the delivery. Otherwise, we can send the request to the production department. This is the program written. So this is all we have to know. Clear? Okay. Hmm. Yes, sir. So I'm just sharing this document, and so I think we have few couple of topic we have to continue. If you just next Monday, है ना? This not Monday, Yes, sir. next coming Monday, है ना? So I Yes, sir. think we have to go with the next Monday to few of the topic we have to go with this to understand. And what you're planning for that, for to maintain your knowledge about the consultant level in your resume or what? Yes, sir. हाँ, क्योंकि अभी क्या करो ना कि अभी देखो I know I don't have any idea about what your current position and what your responsibility. But एक चीज तो कंफर्म है कि your package is not that much level एज ए कंसल्टेंट लेवल. ठीक है, कंसल्टेंट Okay. लेवल का पैकेज जो होता है और एक इंड यूजर का पैकेज, दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, तो Okay. अभी मेरे हिसाब से तुमको एक काम करना है. पहले तो अच्छे से इसको नॉलेज गेन कर लो और अपने Okay. रिज्यूम में यू कैन चेंज
विथ योर कंसल्टेंट नॉलेज, यानी कि तुमने Okay. काम किया है, कॉन्फ़िगरेशन पे काम किया, क्योंकि यू आर इन गोदरेज कंपनी एंड गोदरेज ऑलरेडी Yes. हैज एसएपी यूजिंग। तुम कोई भी विल Yes. नॉट आस्क क्रॉस क्वेश्चन कि तुमने गोदरेज में एसएपी कैसे इम्प्लीमेंट किया, तुमने अपने ही इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया, बस कैसे किया उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है? अगर Correct. कंपनी का कोई बिजनेस ब्लूप्रिंट है जिस पे बिजनेस प्रोसेस दिया हुआ है, तो एक निकालो बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट, उसको अकॉर्डिंगली अपने इस सिस्टम पे प्रैक्टिस करके समझो और अपना Okay. नॉलेज दिखाओ। 3 साल कम से कम तुमने एज ए कंसल्टेंट लेवल पे गॉडरेज में ही काम किया है, उन्हीं के एम्प्लॉय Okay. हो, लेकिन एज ए इंटरनल टीम, एज ए वर्किंग एज ए कंसल्टेंट। तो क्या होगा कि फ्रॉम गॉड यू वांट टू स्विच फ्रॉम दिस प्रेजेंट पोजीशन टू द कंसल्टेंट लेवल, तो दे विल आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग योर कॉन्फ़िगरेशन, कि आपने किस चीज़ Okay. पे कॉन्फ़िगरेशन किया, कहाँ पे, थोड़ा-सा नॉलेज हो। देखो अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो ही स्विच हो पाएगा, नहीं तो फिर वही Mm. जो आज ट्रेनिंग खत्म हो गया, फिर वहीं पे आ जाओगे ज़ीरो लेवल पे, फिर अपने काम में बिज़ी हो जाओगे, सेल्स का वही काम में टारगेट वही में फ फँसे Mm. रहोगे। थोड़ा-सा रि Correct. थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। अभी हम मेरा यही सजेशन होगा कि बेटर यू कैन टेक योर टाइम फॉर एट लीस्ट 1 टू 2 मंथ टू नो द डीप नॉलेज। अभी देखो, ये कोई शॉर्टकट नहीं है एसएपी में। ये जब तक तुम सिस्टम से फ़ैमिलियर नहीं होगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये नहीं कि हमने बता Correct. दिया, रिकॉर्डिंग देख लिए, सुन लिए, हो गया खत्म। नहीं, जब तक तुम खुद अप्लाई नहीं करोगे सिस्टम में, तब तक नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कोई को नहीं पता है। लेकिन जब तक वो सिस्टम के अंदर के वो फील्ड्स वगैरह नहीं जानते हो, तब तो कुछ नहीं बता सकते। वो पकड़ लेगा कि ये Yes. बंदे को नहीं मालूम, इसका मतलब तो सिस्टम में काम नहीं किया है। तो सिस्टम में काम करने का नॉलेज अगर है तो सिस्टम पे वो पूछेगा ही। तो थोड़ा-सा मेहनत करो, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. हाँ, क्योंकि मेरा वही सजेशन है, तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस है और तुम इस पे जा सकते हो कंसल्टेंट लेवल पे और पैकेज भी अच्छा मिलेगा, ठीक है? लेकिन Correct. मेहनत करो, देखो बीच में ड्रॉप कर दोगे, ब्रेक ले लोगे तो फिर वहीं आ जाओगे, ज़ीरो लेवल पे आ जाओगे। Yes, इसीलिए sir. थोड़ा-सा Correct. हार्ड मेहनत करना है, ठीक है? तभी आगे बढ़ पाओगे। Yes, sir. मैंने देखा, मेरे देखो, यकीन करोगे, मेरा एक कैंडिडेट है, पहला या Mm. दूसरा कैंडिडेट था। आज वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। Okay. प्रोजेक्ट, और वो क्या किया था ना, सीआरएम पे काम कर रहा था। वो एज इंडिविजुअल था, उसने सिर्फ कुछ चेंजेस किया और कंसल्टेंट दिखा दिया। एचपी में था, एचपी में था, एचपी का ही एक्सपीरियंस, जैसे तुम गॉडरेज में गॉडरेज का ही दिखा दो। हाँ. तो उसने दिखाया और उसका हो गया, आज के डेट में प्रोजेक्ट मैनेजर है। कितना, Okay. हमको लगता है 10 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। तो Okay. तीन 2 से 3 साल काम करोगे ना तो आराम से टीम लीड हो जाओगे। टीम लीड का पैकेज मालूम कितना है? मिनिमम 20, No? हाँ. 16 to 20। हाँ, अब सोच लो अभी तुम्हारा पैकेज क्या है, उससे कंपेयर करो। 20 लाख तक मिनिमम, मिनिमम टेलिंग, उससे भी ज्यादा हो Yes. सकता है। ठीक है? तो थोड़ा सा मेहनत करके आगे बढ़ना है, ठीक है? बाकी हम तो Yes. हैं यहाँ पे, गाइड कर रहे हैं ना, ठीक है? Yes, sir. Yes. Okay, then, Yes, so sir. we'll do one thing. By next class on this Monday, we'll plan anytime in daytime, है ना? Yes, sir. Monday, ठीक है? Tuesday, I'm बिल्कुल। available for full day. हाँ, हाँ, कोई भी फुल डे में हम लोग एक अच्छा लॉन्ग सेशन लेंगे, बैठ के जो पेंडिंग रिमेनिंग टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे इस पे, रिज्यूम प्रिपरेशन या कैसे क्या करना है, ठीक है? ओके? Correct, sir. Yes. Yes. या Yes. तो सी यू ऑन द Okay. नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। ओके देन, Okay, हाँ? sir. Okay. Okay. बाय, बाय। Okay.